Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And here I have come up with one of the concept, that is spring cutting problem. Okay, usually this question has been asked in your competitive exam. What you are able to see that there are two springs having spring constant K1 and K2. Between the two springs there is one block which is attached, that is 4 kg, and the other one which is of 6 kg, which is attached to the second spring. The question is asked, find acceleration of both the blocks after cutting. Means after cutting the second spring, as you are able to see in the figure, what is the acceleration of both the blocks? Okay, so first what we will do, I'll be explaining you two methods. Pehla method hoga, that is your traditional way of solving, and second, that is a dhasu way of solving. Okay, mentos way. So please watch the whole video. Fine. So traditional method. So first we will solve this by FBD. So I am going to explain you the FBD, that is a free body diagram, before cutting. Before cutting, what is the situation? Okay, before cutting the spring, second spring, what is the situation? So for 6 kg block, okay, for 6 kg block, what is the weight acting downward? 60 Newton mg, correct? 6 into 10, 60. And there is one restoring force which is given by kx, correct? So here spring constant is k2. So I'll write here k2x. The weight is pulling the block downward, whereas the restoring force which is created in second spring, it is trying to pull it upward. And right now it is in equilibrium. वो equilibrium में है, ना ब्लॉक नीचे जा रहा है ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और स्प्रिंग अभी कट नहीं की है. So basically, if it is in equilibrium, total upward force should be equal to total downward force, that is net force is 0. So what I can say here, that k2x should be equal to 60 Newton. Fine. Now when I talk about 4 kg block, so 4 kg block, where is the weight acting? 40 Newton in the downward direction. As you can see that 60 Newton force was acting downward, okay, in upward direction, that was K2x restoring force. Similarly, the same K2x will be created over here, which will be acting in downward direction, right? So force 40 Newton, K2x downward, 40 downward. So I need to show here K2x. और ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, दैट इज विद रिस्टोरिंग फोर्स k1x, क्योंकि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, तो ऊपर लगेगा k1x. 4 kg ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस, एक 40 न्यूटन नीचे खुद का वेट, और ये रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग की वजह से जो उसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा जो इस ब्लॉक को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, k1x. अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो एज यूजुअल टोटल अपवर्ड टोटल डाउनवर्ड फोर्स सेम होना चाहिए, नेट फोर्स 0. तो यहां से हम इक्वेशन ये लिख सकते हैं कि k1x इज इक्वल टू 40 प्लस k2x. k2x अपना 60 है, सो 40 प्लस 60 दैट इज 100 न्यूटन. ये आया मेरा k1x. ओके, दिस इज द सिचुएशन बिफोर कटिंग. तो कट करने के बाद क्या होगा, जब ये हम कट करेंगे तो K2x जो होगा 6 kg ब्लॉक के ऊपर जो K2x लग रहा है वो वैनिश होगा फॉर दैट इंस्टेंट. ओके, सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एट दैट इंस्टेंट. जब हमने कट किया तब एक्सेलरेशन क्या है. ओके, पर ये आपको समझना है कि फॉर 4 kg ब्लॉक, फॉर दैट इंस्टेंट, फॉर दैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, और 4 kg ब्लॉक, ओके, K2x भी वैनिश होगा, यहाँ पे K2x भी वैनिश होने वाला है. सो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे चेंज होगा वो देखते हैं. ओके, फ्री बॉडी डायग्राम आफ्टर कटिंग. आफ्टर कटिंग तो पहले 6 kg ब्लॉक, अब K2x को वैनिश करेंगे,
तो ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बस 60 न्यूटन फोर्स, और वो नीचे एक्सेलरेट होगा। मान लो उसका एक्सेलरेशन a1 है, so there is only one force acting in downward direction, right? So what we can write, that is 60 newton, okay, is equal to mass is 6 or acceleration is a1. Force, net force is equal to mass into acceleration, correct? Net force is equal to mass into acceleration. तो आंसर आ गया 60/6 which is equal to a1. So a1 is equal to 10 meter per second square, that is it is under free fall condition, it is freely falling. जब हम K2 को कट करेंगे तो वो लॉजिक सा बनता है, राइट? जैसे मैंने K2 को कट किया तो ये 6 केजी ग्रेविटी के अंडर फॉल होने वाला है, तो उसकी वैल्यू तो 10 वैसे भी आने वाली थी, ठीक है? अब हम 4 केजी ब्लॉक का देखते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट 4 केजी ब्लॉक, कि जैसे कि मैंने बताया था ये K2x क्या होने वाला है, वैनिश होने वाला है। तो नीचे का फोर्स कितना लग रहा है अभी, 40 न्यूटन, पर फॉर दैट इंस्टेंट K1x की वैल्यू 100 न्यूटन ही होगी। फॉर दैट इंस्टेंट K1x की वैल्यू 100 न्यूटन ही होगी। तो 100 न्यूटन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो देखो कौन सा फोर्स ज्यादा है, 100 न्यूटन इज ग्रेटर देन 40 न्यूटन, तो बेसिकली एक्सेलरेशन कहां पे होगा 4 केजी ब्लॉक का, ऊपर की तरफ, है ना? तो इक्वेशन लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए टू। सो 100 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 4 इंटू ए टू, करेक्ट? So 100 minus 40 is 60 is equal to 4 into A2. So 60 upon 4 is equal to A2. So A2 is equal to 4 ones are 4, 4 5s are 20 meter per second square. तो ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जाएगा और 6 केजी ब्लॉक फ्री फॉल स्टेट में रहेगा. I hope you understood. So this is a traditional way of solving. It will take little bit time. What is the smartest way of solving? Okay, Mentos way of solving is, I hope अपने स्क्रीनशॉट लेके नोट किया होगा. Okay, I'm moving further, I'm erasing it. Okay, let us go with smartest way. Okay, or you can say Mentos, Mentos, Mentos लिखते हैं, Mentos way. Okay, so for that acceleration, okay, of 4 kg ब्लॉक, ये तो लॉजिक सा बनता है, जैसे मैं स्प्रिंग को कट करूंगा तो ये फ्री फॉल स्टेट में जाएगा, तो इट विल फॉल अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये आंख बंद करके भी आप आंसर दे सकते हो. सवाल आता है 4 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं. ओके, सो एक्सेलरेशन के लिए बेसिकली फॉर्मूला होता है, ठीक है, रिमूव्ड फोर्स, रिमूव्ड फोर्स divided by mass of remaining block, mass of remaining system. You say removed force divided by mass of रिमेनिंग सिस्टम. सो रिमूव्ड फोर्स, कौन सा फोर्स रिमूव किया हमने, इसको कट किया तो K2x को हमने निकाल दिया था, और जिसकी वैल्यू बिफोर कटिंग K2x की वैल्यू कितनी थी, 60 न्यूटन. तो बेसिकली which force I have removed, 60 newton. So removed force is 60 and mass of remaining system. So ये कट होने के बाद मास कितना बच रहा है, सिर्फ 4 kg, that is 15 meter per second square. This is your acceleration of the 4 kg block. तो ये ट्रिक आप नोट करके रखो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैवंट अंडरस्टूड, प्लीज write the comment in the comment section so that I can solve your queries and your doubts. And those who haven't subscribed yet, please subscribe karo, like karo, share karo. Thank you.